Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing amazing. Today is January 15th, 2022 और टाइम हुआ है अराउंड 7:30 AM। तो मैं रेडी हो गई हूँ। एज़ यू सी मैंने लेगिंग्स पहने हैं, अंदर एक टी शर्ट है और ऊपर एक स्वेटर है। और ये बैकपैक जो रेड वाला है इसमें मेरे अमायरा और अनायता के कपड़े पैक्ड है। ये कुछ टॉवल्स है और डाइपर्स। And before I go further and tell you guys where we're going, let me just quickly make the bed because सुबह सुबह अगर बेड ना बनाओ तो बाकी का दिन बहुत लेज़ी फील होता है। सो फटाफट मैं बेड बना देती हूँ एंड ऑफ कोर्स हाइड्रेटिंग माई सेल्फ विद सम वाटर। तो ये है ह्यूमिडिफायर हमारे रूम का और ये है साउंड मशीन और ह्यूमिडिफायर एना के रूम का। सो ये सब मैं पैक कर रही हूँ क्योंकि आज हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं टू अ कॉटेज। तो इस बैग में हर्ष के कपड़े हैं, इस ग्रीन वाले बैग में मैंने थोड़े टॉयज़ लिए हैं, ये वाली बैग में खाने का सामान है लाइक ऑल द ड्राई फूड, पास्ता सॉस, राइस, मसालास, और यहाँ पे ब्रेड, बनानास, सम टी एंड अदर फूड स्टफ़। और इस वाले कूलर में हम सारा फ्रिज का सामान लेंगे। सो वी हैव सम लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स। ये 2 मैरिनेटेड चिकन हमने ख़रीदे थे कल रात, थोड़ा सा योगर्ट है, चीज़, ये थेपला मैंने बाहर से लिया था, साथ ही ये कुछ वेजी बॉल्स है और एग्स। ऑल दिस विल गो इन द कूलर। सो नाउ वी आर ऑल पैक्ड, स्टफ्ड एंड वी आर हेडिंग टू अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस। जैसा कि आप देख सकते हो इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी अ 3 आवर जर्नी। और दोनों छोटे बच्चों के साथ ये बहुत ही एक्सट्रीम वेदर में हम पहली बार इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं, बट इट्स फॉर अ वेरी स्पेशल डे विच आई शेयर विथ यू फर्दर। तो हमने एक स्टॉप लिया था अराउंड 1 आवर आफ्टर द ड्राइव एट टिम हॉर्टन्स क्योंकि हाँ बच्चों ने तो ब्रेकफास्ट किया था पर हमने कुछ खाया नहीं था। So we got a quick snack for all of us, and here I'm enjoying my coffee while Harsh is driving. मौसम बहुत अच्छा है but it's super cold today. So finally after 3 hours we have arrived at the beautiful magical acres. That's what it's called. We have rented this cottage for the weekend. So that's the entrance of the cottage and this is the kitchen, and the owners had left such a beautiful welcoming cute note for all of us. और हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे तो पहले तो थोड़ा आराम कर रहे थे और कैस्पर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये है बैकयार्ड एंड इट्स सो ब्यूटीफुल बट सुपर कोल्ड, तो हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और ये ऊपर का फ्लोर है। अमायरा हैज़ ऑलरेडी सेटल्ड इन हर बेडरूम। हेलो, हाय अमायरा, आर यू स्लीपिंग? And this bedroom. तो ये वाला एक बेडरूम है जहाँ पे हमने एना का पैक एंड प्ले रखा है, एंड दिस पैक एंड प्ले वाज प्रोवाइडेड टू अस बाय द ओनर, सो वी डिडंट हैव टू कैरी एनीथिंग। और अब चलते हैं तीसरे बेडरूम में जहाँ पे हर्ष और मैं सोएंगे रात को। सो दिस इज़ अ प्रीटी क्यूट लॉफ्ट काइंड ऑफ अ रूम, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेड है और एक आर्म चेयर है एंड सम बुक्स इफ समवन वांट्स टू रीड, एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस ब्यूटिफुल व्यू ऑफ द कॉटेज फ्रॉम द टॉप। Mama, the big dinosaur. Mama, Oh my god. it's gonna eat you. Wow, Casper. Wow. You like to dance? And I get to start a show today. She got white shoes and pink shoes. Yes. Here. Yes. Go. Play. Hi. Yes. Yes.
So, after the initial crazy excitement, I decided to just unpack everything and put all the food in the fridge and also arrange all the dry food, masalas, and everything into the shelves and clear the kitchen counters. और बहुत थके हुए थे, खाना बनाने का मन नहीं था, सो द ईजीएस्ट ऑप्शन वॉज मैगी. यही सोच के हमने मैगी कैरी की थी कि बच्चे भी खा लेंगे और फटाफट बन जाएगी. सो मैं आई थिंक 4 या 5 पैकेट्स से वो बना रही हूँ मैगी के फॉर ऑल ऑफ अस. Hello, come Anna, come here. सो हमारा लंच काफ़ी लेट हुआ था, अराउंड 3:30-4 बजे. उसके बाद बच्चों को भूख नहीं थी एंड दे वर टायर्ड, सो दे स्लेप्ट ऑफ अर्ली. So Harsh and I decided to just roast that marinated chicken that we had bought for ourselves for dinner. And we had a very quiet, peaceful, relaxing evening after all that chaos since the morning. And we brought in my birthday, listened to some good songs, just caught up with each other, and watched a few episodes of Schitt's Creek, which we loved. Wake up! Good morning. It's the next morning around 8 a.m. and I'm just preparing some milk for the kids before they have their breakfast. Yes. Happy birthday, Mama. Thank you, baby. So happy. Amira, here's your milk. Okay, so breakfast time. यहाँ पे hot chocolate पड़ा हुआ था, so I decided to make some hot chocolate for Harsh. और बच्चों के लिए मैंने oats ही बनाए थे because they love that, and I'm making some अदरक वाली चाय for myself. And Alu, okay, come, let's eat. Kids really surprise you at the most random times. Anna never really liked eggs when we cooked at home, but आज पता नहीं उसको बहुत ज़्यादा मन हो रहा था and she was eating a lot from my plate. Breakfast के बाद we wanted to have some hot beverage, so we decided to make some pomegranate tea that we had got from home. और बस थोड़ी देर खेल रहे थे and then Harsh took Anna for her nap while I was just chilling here with Casper and Amira. Hi guys, welcome back to my channel. So if you've been watching so far, then thank you so much for watching. As you know, हम यहाँ पर है cottage में. It's in Tobermory, which is the northern part of Ontario. It's about a 3-hour drive from Brampton, जहाँ हम रहते हैं. We came here yesterday around 12:30-ish, 12:31 p.m. and then we just settled in here. फिर दोपहर को एना थोड़ा सो गई थी, like just half an hour or so, because नई जगह थी तो she was very excited. The weather is also crazy. It's been super cold since the last week. It was -21 degrees and today also it's the same. शाम को भी हम cottage में ही थे. Kids slept off early. Amira तो 6 बजे ही सो गई थी because काफ़ी थकी थी और उसने nap भी नहीं लिया था. And Anna also, because she had a very short nap, she slept around 7. And then Harsh and I had our own relaxing time. और आज का दिन काफ़ी अच्छा जा रहा है. We woke up around 7 in the morning. ये cottage इतना ज़्यादा cozy है, very very tastefully decorated, and we're all loving it so much. We're not missing going out actually, but we'll still go out today probably just to get some fresh air. और थोड़ा सा देखेंगे कि आसपास क्या है. So far, right now it's about 1 p.m. and today is my birthday. Most amazing birthday ever.
सुबह पेरेंट्स से भी बात हुई, माई इन लॉज वी ऑल्सो स्पोक टू देम, फ्रेंड से बात हुई एंड हम वी हैड अ वेरी रिलैक्सिंग मॉर्निंग अगेन. वी मेड सम ब्रेकफास्ट, वी वर जस्ट टेकिंग सम पिक्चर्स, जस्ट लिसनिंग टू म्यूज़िक. हमारा फ़िलहाल अपने कैसल में, वहाँ पे जो आप देख रहे हो, Anna is taking a nap right now. इस आज का उसका nap काफ़ी अच्छा जा रहा है because I think now she's a little used to this place. Harsh is also sleeping with her in the same bedroom. Anna उठेगी, उसके बाद हम बाहर जाएंगे lunch करके. So right now Casper is also sleeping here inside the blanket, all cozy. तो बस ज़्यादा व्लॉग नहीं किया है क्योंकि हम वी वर जस्ट स्पेंडिंग सम क्वाइट टाइम बाय आवरसेल्व्स. बट या वंस वी गो आउट आई विल होपफुली टेक सम मोर वीडियोस एंड शेयर विद यू गाइस. You have to bring Casper. Hey, Casper. Casper wants to do pee-pee. Okay, he'll do pee-pee and then come inside. मैं ये थेपला लाई थी, तो आज का लंच होने वाला है थेपला एंड आई गॉट सम पोटैटो, सो आई एम गोइंग टू मेक आलू की सूखी सब्जी एंड वी हैव सम दही ऑल्सो. So it's going to be a quite desi, yummy, simple lunch. So let's get cooking. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you. I'm a regular. I'm a watch. You are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. So that's it guys. आज है 17th of January and I left this little note for the hosts in their guest book, and I loved reading all the other feedback that the other guests had left. And बस 2 दिन हुए हैं and I know it's such a short time but we were so attached
to this place already because we had such wonderful moments and memories that we created here as a family. For the first time, we stepped out of our area and had an overnight little short vacation. So it was really, really special. And अभी टाइम हुआ है अराउंड 10 साढ़े 10 बजे सुबह के. हर्ष इज़ लोडिंग द कार while I'm here just giving you a last little tour of this place. So ये है उनका laundry area जहाँ पे हमने कुछ use नहीं किया because we didn't really need to wash anything. And they only have one main bathroom in this cottage, which is a good thing. You preserve water. So this was a pretty spacious, very cozy bathroom. So we had no issues. और bathroom के साथ ही main level पे एक और bedroom है जो हमने use नहीं किया because that was a little away from the top floor and we wanted to be closer to the kids. ये वाला बेडरूम सबसे ज़्यादा कोजी था बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट यूज़ इट. सो नेक्स्ट टाइम अगर हम और भी फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आएंगे देन वी वुड डेफिनेटली मेक यूज़ ऑफ ऑल द बेडरूम्स इन दिस हाउस. सो वी क्लीनड अप एवरीथिंग एंड केप्ट एवरीथिंग द वे इट वाज. इट डिडंट टेक मच टाइम एक्चुअली. सबसे ज़्यादा टाइम किचन का सामान रखने में लगा. सो गुड बाय कॉटेज. तो हम बस निकल गए हैं और हमें कुछ फ्रेंड्स के मैसेजेस आए थे कि टोरंटो और GTA एरिया में बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म हुआ है एंड इट्स द वेदर्स क्रेज़ी. देयर हैव बिन अ लॉट ऑफ वार्निंग्स जबकि यहाँ पे अभी तक हमें कुछ फील नहीं हुआ था एंड वी वर जस्ट होपिंग कि हम ठीक ठाक पहुँच जाए. वी वर रियली टायर्ड फ्रॉम ऑल द रनिंग अराउंड एंड पैकिंग एंड लोडिंग एवरीथिंग बैक बट लेट्स होप वी रीच सेफली. धीरे धीरे एज़ यू सी हमें थोड़ा थोड़ा वेदर का एक्सपीरियंस होने लगा था बाय दिस टाइम एंड वी वर अबाउट एन आवर अवे फ्रॉम होम. तो वी वर जस्ट प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर इट. Yes, Papa's cleaning, baby. Papa's cleaning the snow. As expected, as soon as we entered GTA, it was a bad situation. The big roads were at least being cleaned by the city cars, but छोटे streets बहुत ज़्यादा blocked थे. As you see our neighbor over there in the red jacket, thankfully she came with her snowblower to help us clear the snow on our driveway. We literally had about 3 feet of snow and our car got stuck and we had to like literally take one kid at a time, pick them up, and then Harsh had to shovel the street and then slowly drive and bring the car. और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी रूफ़ है जो हमारे विंडो के बाहर ही है इन आवर मास्टर बेडरूम और वहाँ पे भी पूरा स्नो जमा हुआ था. So that's it for this video. I'm so sorry I couldn't film an outro. हम सब इतना ज़्यादा थक गए थे. So बच्चों को खाना खिला के we just put them to bed and then we slept early as well. But it was a very fun little small family trip. Although the weather was crazy, but we had a wonderful time. If you've made it so far, then thank you so much for watching. I'll see you very, very soon in another vlog. If you enjoyed this, then please do give it a thumbs up and subscribe to my channel. And please also follow me on Instagram for more instant updates. Thank you for watching once again. I'll see you soon. Bye.